things. And let us go when we use on as a place or a preposition on in place. So on is used for most specific or more specific places for certain things, and for also on plus means of transport. ये अच्छी तरह याद रखें. हम generally most of the people go wrong in preposition, use of preposition. Especially we generally call it as in the train. I am in the train, I am in the bus, but that's prepositionally incorrect. So we use on for the means of transport. So on a bus, on a train. Generally हम लोग क्या कहते हैं? I am in a train. Generally हम पूछते हैं कहाँ है, तो बताते हैं मैं ट्रेन में हूँ, तो लिटरल ट्रांसलेट करते हैं, तो वो ट्रांसलेशन यहाँ गलत हो जाता है. So we use on for means of transport. So like for example, I am on a bus, I am on a train, I am on a plane. So in the same way. So उसी तरह on plus communications. हम लोग अगर communication, जो भी communication, the means of communication है, जैसे means of transport की तरह उसी तरह means of communication है, उसको भी हम लोग we use on as a preposition of place. Like I am on the radio, on the television, on the phone, on the internet. Like generally on के बदले in ज़्यादातर use करते हैं, जो कि गलत है. So let us see another one. On plus surfaces. जो भी surfaces होता है उसके ऊपर जो भी होता है we use on as a preposition of place. Like on a table or on the table, on a wall or on the wall, on the floor, on the roof. So इस तरह on जो है टाइम और प्लेस के लिए दोनों के लिए यूज किया जाता है, लेकिन डिफरेंट फॉर्मेट्स में. तो ऑन इज यूज्ड फॉर डेज, डेट्स, हॉलीडेज विथ डे. अच्छी तरह याद रखिए, हॉलीडेज उसके साथ डे अगर जुड़ रहा है तो हम लोग यूज करते हैं ऑन. ऑन प्लस स्पेसिफिक डेज, on plus time. So in the same way for places, on plus means of transport for specific places, on plus communications, and on plus surfaces.